He's looking at your organizing skills, how you're giving or how you're delivering your lecture, it whatever the topic is. Because अगर टॉपिक इसीलिए वहां पे दिया है कि आप बोलो उसमें, अगर वो उसमें वो चाहते नहीं सुनना तो टॉपिक दिया ही क्यों होता? टेस्टिंग हॉल से या टेस्टिंग ग्राउंड से बाहर आ रहे तो तब सारे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. एंड व्हाट सडनली हैपेंड, जैसे टेस्टिंग हॉल में घुसे या टेस्टिंग ग्राउंड में गए तो सब जेंटलमैन बोलना. And like with practice only, I think one can master mathematics. Without practice there is nothing. And like this is not a traditional examination pattern which you are giving in school. They're not looking for your way how you solved it. They just want how have you encircled the right option or not. So sometimes what happened, like मेरे से भी ये गलती हो रही थी. In order to perform better, we were not showing our natural self. Like yeah, sometimes क्या हो रहा था, fake personality दिखा रहे थे. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है. इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए. आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है. क्योंकि मैं खुद एक एक्स NDA हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ. मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. Today we have with us Gautam Negi. He has been recommended for CDS entry for IMA. So congratulations Gautam on Thank your you. achievement. And पहले हमारी गौतम से पहले मुलाकात हुई थी कमांडेंट राजीव रंजन सर के इंटरव्यू प्रोग्राम में. And then he messaged me कि सर recommend हो गया. So that was a great news. And Gautam, it's very nice to see you because हमारे शो पे ना CDS कैंडिडेट बहुत कम आते हैं. तो जनरली इट्स NDA और TS वाले, बिकॉज CDS वाले मिलते ही नहीं है. Yes, तो sir. इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट आई एम श्योर कि तू आ गए सो काफी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी. Yes. गौतम, अपने बारे में एक बेसिक इंट्रो, कौन है गौतम, कहाँ से आया है, अगर तो ऑडियंस को दे सके तो. Yes, sir. So myself Gautam Negi. So I am from Tiri district of Uttarakhand. I have done my entire schooling from Kendriya Vidyalaya, New Tiri town only, and thereafter I did my BSc with PC Physics, Mathematics, and Defense. And currently I'm in my last year. I just gave my last semester exam. The result is not out, so I'm waiting for my degree. And after, as it was my childhood dream to join armed forces, so I started giving SSB just after my 12th. I gave 5 SSBs for 10+2 entry like TES and NDA, but it didn't bear any fruit for me. So after my graduation, I just appeared for CTS IMA for the first time, and luckily I got recommended. Great. So, and No luck, huge yeah, it's contribution your hard work. of Commandant Ranjan sir in that, who guided me in the interview program, as you mentioned earlier. So thank you so much, sir, for that thing. So for those who don't know and those who have realized also कि गौतम ने पहले NDA की wanted to go for NDA और OTA गया, but somehow it didn't work out. So after graduation, you know, he gained exposure, maturity, and he worked on himself, and subsequently he cleared CDS written in his first attempt only. So, and even the SSB. So we will discuss about written and SSB, CDS SSB, his experience in this video. So first of all, Gautam, अगर if someone has to start CDS written preparation them from zero, so what will be your suggestion to him? Then would be to analyze the entire syllabus. So like for those who are from the science background, for them it's like I will not say cakewalk, but it's for them it's very easy. Because if you look at the GS, there are 30 questions from the science background only. So and they are average level questions just from 10th level or 9th level standards. So I think one can do that. So first of all, you have to analyze the entire syllabus. Then you have to find what are your strengths, what are your weaknesses.
So if you think that you are good at polity, if you think you are good at geography, pick any one of them. There is no need to go for the entire thing, because if you look at the sectional cutoff, it is just 20%. So you have to just miss out the cutoff of the GS. So like, for what was my strategy, I was like good at mathematics. So I just practiced the I had one book of Arihant, like this Arihant book. So I practiced it maths from that only. Then I gave some mock test. I analyzed previous year papers. And for GS, what was my strategy? I read Lakshmikant for polity, and I also covered geography from 11th and 12th NCERT. And as I was a science student, so it was easy for me to do science questions. And apart from that, I was regularly reading the Hindu newspaper, which was helping me in covering current affairs. So I think this is one strategy and everyone can follow. And as I was also reading the newspaper, it was helping me in covering English portion also, because it will help you in building your vocabulary, and also you will learn some grammar rules from there. So I think if someone is like second year or third year of graduation, he should start his preparation from now only. He should not wait for completion of his graduation. So this would be my advice. You can do this thing. Great. So thank you for the wonderful suggestion. So यार जो GS वाला पार्ट रहता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सो तुमने उसमें से कौन सा चूज किया, जैसे यू हैव सेड? सर मैंने तो हिस्ट्री बिल्कुल भी टच नहीं किया, इकोनॉमी मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, बिकॉज हिस्ट्री इज सच वास्ट सब्जेक्ट. इवन इफ यू विल रीड इट, देयर विल बी सम क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग व्हिच यू विल थिंक ये कहां से आ गया. यू विल बी लाइक दिस टाइम भी, अभी मैंने सीटीएस अभी दिया है, वो भी मेरा क्लियर हो गया अभी 4 सितंबर को. तो उसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मुझे एक भी समझ नहीं आया. तो मैं हिस्ट्री में बिल्कुल भी टच नहीं करी, और इकोनॉमिक्स मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करी. बस तो मेरा जो मेजर पोर्शन रहता था, साइंस 30 क्वेश्चन है, वो अपना जोन है, वो करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी करनी है, वो मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी. अभी पहले बार पढ़ी थी, तो उसके बाद मुझे बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ी थी. उसके बाद मैंने 11th और 12th एनसीईआरटी से नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के. और मेरे ख्याल से इतना अगर पोर्शन अगर तुम्हारा कवर हो गया, तो यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस. और ये मोर देन 80 to 85 क्वेश्चन कैन फेच यू मोर देन 45 मार्क्स. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी आई फॉलोड एंड इट वर्कड फॉर मी. मुझे शायद किसी को हो सकता है उसे हिस्ट्री अच्छी लगे, शायद वो स्ट्रांग हो हिस्ट्री में, सो ही कैन गो फॉर दैट. बट फॉर अकॉर्डिंग टू मी, आई डिडंट टच हिस्ट्री, क्योंकि मुझे काफी बोरिंग भी लगता था और काफी कंफ्यूजिंग भी है. इतना इतना मुझे याद रहता नहीं है, इसलिए मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए गया. हिस्ट्री आई लेफ्ट. और इको भी काफी ऐसा सब्जेक्ट है. इको अगर कभी तो कुछ क्वेश्चन उसमें काफी बेसिक होंगे, कुछ टफ होंगे. तो अगर जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो मैं अटेम्प्ट कर पाता था, क्योंकि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, so I was covering economy section also from the newspaper, so it helped me in attempting some of the questions from economy. So this is what I did. Okay, great. Moving on to mathematics section, काफी बच्चों को मैथमेटिक्स में बड़ी दिक्कत आती है, जो खासकर मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते. तो क्योंकि पहले तो एनडीए का पेपर खुद ही मैथमेटिक्स के लिए इतना बायस्ड है पेपर, और फिर सीडीएस आईएमए के लिए भी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत है. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर, एंड हाउ वुड यू सजेस्ट समवन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स? If I compare NDA mathematics with CDS mathematics, so NDA mathematics far tougher than the CDS one. Their 11th and 12th mathematics is coming. But if you look at the mathematics of IMA, CDS IMA, it is just basic mathematics of up to 10th level. So for that, if I think what I did, I first of all I went through all the chapters. Aryan book is there, and then I made the notes of all the formulas. I wrote them, I revised them, because the main thing is you have to remind the formulas, because in the when you are sitting in the exam hall, what is happening, sometimes you are forgetting the formula, and then if you are forgetting the formula, no way you can do that question. So first the prior thing is you have to remind the formulas. So that thing I did, I made the notes, I revised them, and then I practiced the question from each and every chapter, because practice is the key, I think, because no one is perfect since his birth. मुझे भी काफी शुरू में दिक्कत आई थी. I practiced it. Even I could not clear my NDA exam in my initial 2 or 3 attempts. But when I did practice is the key. So practice karoge. Then I practice question from each and every chapters.
Then there were some YouTube channels which I followed. Like there is one YouTube channel, CDS Journey. So Anurag that is there. like already cleared CDS multiple times. So I followed him because if someone has already cleared that exam, so he can guide you very well. So Yes. I followed his channel, and then I practiced question from each and every chapter, and then I gave some mock also. Like from Baiju channel, I gave some mocks there, and like with practice only, I think one can master mathematics. Without practice, there is nothing. And like this is not a traditional examination pattern which you are giving in school. They're not looking for your way how you solved it. They just want how have you encircled the right option or not. They're not looking at your approach. So like most of the question you can do in mathematics by hit and trial method. Like if trigonometric question is there, like tan theta, sine theta, is some questions are there, you can just simply put the formula in that value. You will get the answer within 5 or 10 seconds. You will get the answers. So this is what I followed, because you have to like maximize your attempts. Because English and mathematics is scoring part. GS is not a scoring part. Most of the students are weak in GS. So I think English and mathematics are scoring. So like if you want to score 60 plus questions in mathematics, so you have to apply hit and trial method in most of the questions. So this is what I did for mathematics, sir. Great, yeah, great. I think some great insight you have provided. So यार you know काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका सपना है ड्यू टू द इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो वीडियोस है कि यार एनडीए जाना है बस किसी भी हालत में 12th के बाद, और somehow you know after attempts नहीं हुआ उनका क्लियर. तो फिर how to get back, because you have faced it कि you wanted to go to NDA/OTA but somehow Yes. नहीं हुआ, then how to get back, what to do, and what was going in your mind and during your CDS preparation when you started then CDS preparation. सर तो व्हाट आई थिंक कि अगर इफ समवन रियली वांटेड टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस तो उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. Like जब मेरा भी एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा था, दो like for some days after coming from SSB, after getting screen out or conference out, you will feel little bit of low. It will take some time to get back to your preparations, but when you will have that inner zeal or inner motivation ना, तो I think sir वो बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will start your preparation again. तो लाइक मेरा भी जब शुरू में एनडीए क्लियर नहीं हुआ तो लाइक अभी घर वाले भी बोलते थे लाइक यू गॉट सच गुड परसेंटेज 10th 12th, आपका क्लियर क्यों नहीं हो रहा है रिटन एग्जामिनेशन. देन आई लाइक एनालाइज्ड व्हाई मैं क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. मैंने देखा लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, रिटन मैथमेटिक्स में बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से चल रहा हूँ, जो स्कूल में जैसे एग्जाम देते थे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ. मैंने कहा ऐसे में तो मेरे 30 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे एनडीए में रिटन में. इसमें सर लाइक इनिशियल इन माय 2 or 3 अटेम्प्ट्स व्हाट हैपेंड कि मेरे 30 to 40 क्वेश्चंस हुए थे मैथमेटिक्स में बस. और अगर आप एनडीए में क्या होता है, मैथमेटिक्स की कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो आपका जीएटी भी चेक नहीं होता है. तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ऐसे, तो मैंने कहा जब ये बच्चे क्या क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और मैं बस 30 या 40 क्वेश्चन में अटक जा रहा हूँ. देन आई एनालाइज्ड, फिर मैंने देखा कि जो मेरी अप्रोच है वो गलत है. Even though I'm knowing the solution of all the questions, still I'm not able to do it. Then I analyzed my like performance, then I switched my like strategy. तो मैंने देखा like question यहाँ पे hit and trial से होंगे maximum question. You don't have to follow the traditional method by applying formula then integrating the complete thing like that. You don't have to do that. So then after that I cleared 2 times NDA, and in those attempts I attempted almost 90 to 100 questions in mathematics. So I think that strategy worked for me. And if I like when I was preparing for CDS, so like when you are 10+2, like when you are preparing for NDA and TES, then that tension is not there for job tension is not there. You are free. That thing is like you have to do college. That is the only thing you have in back in your mind. But when you are graduate or almost you are graduating, then you have one more tension in your mind that you have to find job also. So that so there like till my second year of my college I was giving ND or TS SSB. And in my second year when I like last I gave ND SSB, I got skinned out in that. Then I immediately after that I didn't wasted any time. I started preparation for my CDS. I was very much clear in my mind I have to go into armed forces.
doesn't matter will I be able to join NDA or IMA, like it can be any academy, just only thing is I have to be in the uniform. हाँ यूनिफॉर्म and पहन लो. yes, like sir, like some जब कोई आर्मी में चले जाए तो उसके बाद academy doesn't matter. The हाँ only thing matters एक्चुअली is how you're performing in the armed forces. सितारे सबके So सेम ही लगते हैं, सो इसलिए yes, नो yes, अच्छा तू नेगी है, यू आर फ्रॉम उत्तराखंड. yes sir, I'm from Uttarakhand, Tirek से गढ़वाली. Gravali basically. or Gravali. Okay, great. Yeah. So you want to join Gravali infantry? Yes sir, definitely. Like अगर मिल जाए तो, like this time also in the interview you asked me like which regiment अच्छा. you want to join. I हाँ. told him sir, I want to join Garhwal Rifles. So then he asked me who is the colonel of the regiment. Then I told him this. Then You he told told him? me, yes sir, तेरे को I पता gave था? him. Yes sir, and he also knew that. And like he also knew that, and then he was grilling me. Are you sure this is the colonel of the regiment? Don't you think the colonel has been changed in recent time? I said no sir, this is the what I can remember, this is the colonel of the regiment. Then he was like okay. गुड यार, करो तो रेजिमेंट तो मतलब ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं है. तुझे कहाँ पे गूगल पे मिल जाता है? Yes sir, like you will find it in Google, and as a repeater it is our responsibility to prepare everything. Sir, because हम कोई लूप नहीं छोड़ सकते सर. Ask any one of the repeater, उसको पता होगा. अगर उसको किसी भी रेजिमेंट में जाना है, he is sure like interviewing officer is going to ask you which regiment पता you है, are going पूछेगा वो पूछेगा. to. If someone is opting for para, he will be having all the information of para. Like हमारे ग्रुप में थे, like they were talking of para operatives and like 9 para 4 era. I was confused. मैंने कहा भाई नहीं, रहने दो, इतनी बातें मत करो. मेरे इंटरव्यू ऑफिसर ने मुझे पूछा था कि विच रेजिमेंट यू वांट टू जॉइन, तो मैंने बोला सर आई वांट टू जॉइन 51480 रेजिमेंट एसपी. बोलता व्हाई? बोलते सर माय फादर वाज इन द सेम यूनिट, सो आई वांट टू जॉइन माय फादर्स प्लाटून. तो बोलता है अच्छा. फिर मैं जैसे बोला ना 51480 रेजिमेंट एसपी, तो मुझसे पूछ रहा है इसमें एसपी का मतलब क्या है. तो फिर मैंने बोला सर एसपी मींस सेल्फ प्रोपेल्ड. तो फिर वो हंस रहा था, कैंची स्माइल दी उसने मेरे को, फिर आगे बढ़ गया. बट चलो ठीक है. Anyways, Gautam, so SSB preparation for NDA you had gone to AFPA, right? And Yes, sir. then after a year you took a gap because written एक साल बाद हुआ CDS का, and this time you didn't take any coaching, you took interview program. तो mock interview करवाया तूने रंजन सर से, ठीक है? तो उसके अलावा खुद से क्या प्रिपरेशन किया तूने? Sir, apart from that interview, what my own strategy was, like there was one Telegram channel. Sir, after the declaration of CDS result, CDS 1 2022, there was one channel on Telegram. So there were those candidates who have cleared the exam. अच्छा, So बन गया. yes, sir, we made one group. Like what we did, we used to practice PPDT and group discussion. We used to do group discussion and lecture it in the night from 9:30 to 11. And like there were around 6 to 7 candidates were there. Like those were regular. Sometimes there were 10, sometimes there were 12, but around 6 to 7 were regular. And luckily out of those 6 to 7, 2 of us has got recommended. Like some days before, only one guy got recommended from Kapurthala. So like we used to practice PPDT, and like why we used to do practice PPDT. So what is happening, like though you are practicing like story writing individually, but what is happening, you are not you are not doing group discussion. But that is the very important thing. Like unless you will not do the group discussion, you will not be able to get to know, like, are you really able to convince others? Are you really getting convinced by others in the group discussion? So like to learn these group dynamics, I did that thing. And प्लस like दिमाग खुलता है जब बाकियों के थीम सुनते हो ना तुम, तो तुम्हें पता चलता है कि ये भी थीम पे स्टोरी बन सकती है. उस चीज को ये प्रैक्टिस करके मेरे अंदर इतना पेशेंस आ गया. Like I used to listen each and every point of the candidates. Whatever they are speaking, I'm listening to them. और इससे इस प्रैक्टिस में एक्टिव लिसनर बन गया. Like even in the chaos, I was able to decipher like what is someone is saying at a particular time. So this helped me a lot in my GTO. GTO में बहुत हेल्प हुआ सर. ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, इवन सम कैंडिडेट इज सिटिंग बिसाइड मी. इफ समवन इज नॉट लिसनिंग टू हिम, आई वाज सो मच केयरफुल कि मैं उसका पॉइंट उठा के और बाद में उसका चेस्ट नंबर रेफर करके उसका पॉइंट बोल दे रहा था.
like अच्छा chest number 30, like because yes sir you can do this. bringing up very good point, और like ग्रुप सुन नहीं रहा था, तो आई वाज लाइक चेस्ट नंबर 31 और चेस्ट नंबर 30 हैज ब्रॉट अ वेरी गुड पॉइंट, एंड लाइक जब तुम किसी को रेफर करके बोलोगे ना, सो दैट गाय विल बी इन योर टीम, देन वो तुम्हारे से हाँ अलाइन कर एक ये भी मैं करता था तुम्हें कि in addition to what chest number 10 has said, I would like to add this point. तो yes, sir. मतलब वो सही में फिर वो तुम्हें सपोर्ट मिल जाता है, मतलब काइंड ऑफ मैंने देखा है ऐसा. या यू राइट, आई एग्री. सो यार एंड सर मूविंग ऑन टू, हाँ बोल बोल कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू. ये तो मैंने बताया अपना सेशन जो ऑनलाइन चल रहा था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर डेली टू ब्रश अप माय करंट अफेयर्स, बिकॉज़ सर Great. लाइक फॉर current affairs is very important thing, बिल्कुल because group discussion topic will be like that, in which like some recent scenario will be going on, so you have to be good, you have to have a good insight over current geopolitical issues. Even our GTO like GD topic was on like India's lookist policy only, so for that you have to have good like current affair issue like knowledge, so उसके लिए मैं पढ़ रहा था, और टू लाइक सर इस बार मैंने ज्यादा साइक प्रैक्टिस नहीं करी, आई वाज लाइक आई विल बी वेरी नेचुरल, व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड आई विल राइट एट दैट मोमेंट ओनली. बस वो जो मैं स्टोरी राइटिंग लिख रहा था वो बस पीपीटी के टाइम पे लिखता था, जो रात को हम पीपीटी करते थे. अदर देन दैट आई डिडंट प्रैक्टिस एनीथिंग, आई डिडंट रोट एनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन दिस टाइम. आई वाज वेरी मच क्लियर, वहां पे जो मेरे दिमाग में आएगा आई विल राइट दैट थिंग ओनली. और वेरी सरप्राइजिंग, सर मतलब एक चीज ऐसा और ज्यादा बोलूं, कोई करता नहीं है, सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग. एंड सर लाइक देयर इज वन थिंग, बैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बैट के लिए मैं बोलूंगा प्रैक्टिस चाहिए, because sir that is something even if you are having those officer like qualities, so अगर आप practice नहीं करोगे ना, you will not be able to write good sentences, you will write very simple sentence. so sir उसके लिए मुझे लगता है बैट के लिए आपको practice चाहिए, और SRT something which is very natural, आपको अपना response लिखना है, so I don't think उसके लिए कोई practice की जरूरत है. अगर आपको लगता है like you write very slow और आपको टाइमिंग की जरूरत है, आपको अपने रिस्पॉन्स बढ़ाने, तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि उसके लिए इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है. सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी सर. लाइक तो लुकिस्ट पॉलिसी बोला ना, तो मेरे को उससे चीज याद आई. मेरे जैसे तेरा जीडी का टॉपिक था, मेरे लेक्चरेट का टॉपिक था, तो मेरे लेक्चरेट में वो ब्लैक कार्ड पे 4 टॉपिक लिखे हुए थे, ठीक है. तो मैं जो सोच के गया था कि Yes, जो sir. एक मिड रेंज का कोई टॉपिक रहेगा ना, मैं उस पे बोलूंगा, मतलब बहुत आसान पे भी नहीं बोलूंगा, बहुत टफ पे भी नहीं बोलूंगा, मिड रेंज पे कॉन्फिडेंटली बोलूंगा. Yes, sir. तो मेरा पहला उसमें से 4 टॉपिक से पहला टॉपिक था माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. तो मुझे लगा ये Yes, तो sir. टॉपिक बड़ा अच्छा है. फिर सेकंड टॉपिक आया मनमोहन सिंह, ठीक है. थर्ड Yes, आया sir. ब्लूटूथ डिवाइस. चौथा आया इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी, ठीक है. तो अब मेरे को पता ही नहीं था कि मैं मनमोहन सिंह, और हम मेरे को पता है मनमोहन सिंह क्या है, मेरे को पता है, बट मैं 3 मिनट मनमोहन सिंह पे कौन बोलेगा, ठीक है. फिर सेम Sir, फॉर it's ब्लूटूथ. a way. अब ब्लूटूथ डिवाइस पे 3 Yes, मिनट sir. क्या बोलोगे तुम. तो वो दोनों टॉपिक Yes, आउट sir. हो Yes, गए. sir. माय बेस्ट फ्रेंड बहुत Yes, sir. आसान था, और इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी मेरे को पता ही नहीं था क्या है, मेरे को नहीं पता था उस समय. Yes, sir. Yes. और फिर मैंने सोचा चलो माय बेस्ट फ्रेंड पे बोलते हैं, तो मैंने माय बेस्ट फ्रेंड पे Yes, sir. लेक्चर दिया अपना कॉन्फिडेंस के साथ. माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज Yes, sir. पौरुष कृष्णात्रे, हिज हाइट इज सो एंड सो, हिज वेट इज सो एंड सो, इज वेरी गुड गाय. ऐसे करके शुरू किया मैंने, 2-3 जोक्स डाले उसके अंदर, उसके बाद उसका मजाक उड़ाया, और फिर अपना भी मतलब काफी ह्यूमरस बनाया उसको, और फिर मैं बैठ गया चुपचाप. बट मैं सोच रहा यार मैंने पूरा स्क्रू अप कर दिया. I don't know. This point, as you just mentioned, you gave lecturate on my best friend and you got recommended. So that there is very big like there is one very big myth around the candidates कि आपको अगर recommend होना है तो high level topic में lecturate देना होगा. बिल्कुल बिल्कुल. It's not like that. So आपके GTO is not looking for your like whichever like on which topic you are giving the lecture. He's looking at your organizing skills, how you're giving or how you're delivering your lecture, whatever the topic is. Because अगर topic इसीलिए वहाँ पे दिया है कि आप बोलो उसमें, अगर वो उसमें वो चाहते नहीं सुनना तो topic दिया ही क्यों होता. बिल्कुल तो बिल्कुल. सर ये बहुत बड़ा मिथ है. लाइक आई डोंट ऐसा शायद लोगों को ये मानना नहीं चाहिए. whatever the field जिसमें आप comfortable है उसमें lecture देना चाहिए. मैं उसको इतना एंटरटेनिंग बना दिया ना कि जीटीओ सर खुद हंस रहे थे.
एंड मतलब बढ़िया था, ग्रुप डायनामिक्स बढ़िया हो, ग्रुप भी हंस रहा था, बट ठीक है, चलो ठीक है। बट हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता कि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई तू अच्छे टॉपिक पे बोल, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा ऑलवेज। बट चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। एंड अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा होगा तो इजी टॉपिक पे भी तुम कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए होप मत हारना। तो मूविंग सर वो फॉरवर्ड लाइक अपना, वो हाँ नहीं बोल। yes, sir. वो एक लास्ट रिजॉर्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं हाँ आ रहा तो लो लेवल टॉपिक में बोल लो। इफ यू आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट सम हाई लेवल टॉपिक देन एब्सोल्युटली गो फॉर दैट। मेरे भी लेक्चर टॉपिक में पहला टॉपिक था लाइक लेसन्स फ्रॉम चाइनाज इकोनॉमी। फिर देन आई थॉट कि चाइनाज इकोनॉमी थोड़ा नीचे जा रही है अभी के टाइम पे, तो फिर हाँ मैंने ड्रॉप इसी में इसमें नहीं बोलूंगा। लाइक मेरे 3 मिनट में से 1.5 मिनट तो इसी में निकल गया, मैं बोलूँ किस पे, 1.5 मिनट तो इसी में वेस्ट हो गया मेरा। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक था इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, और एक टॉपिक था ऑनलाइन गेम्स, और एक था नेक्सलिज्म में करके। तो मैंने कहा इंडियाज नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सही लग रहा है, इसमें मैं लाइक हेडिंग्स भी डाल पाऊंगा अच्छी अच्छी, तो मैं उसी में बोल दिया। तो लाइक इतना इश्यू नहीं है, अगर जरूरी नहीं आपको टॉप वाले टॉपिक में बोलना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बोल लो। ट्रू। नहीं, मूविंग फॉरवर्ड अपना जीटीयू का एक्सपीरियंस शेयर कर। हाउ वाज योर ऑब्स्टेकल्स, इंडियन ऑब्स्टेकल्स, रस्सी फट्टा बल्ली, वो कैसे थे? बिकॉज यू वर गोइंग आफ्टर you know a gap of year and a half, so how या was that वन experience like? So like for as it was a gap of 1.5 years, so first task in GTO's group discussion. So what happened to, like, it was a very surprising thing. Like our though we were a group of repeaters, but like what happened, like we were discussing like a freshers. Like सर ग्रुप इतना अच्छा मिल गया कि सब एक दूसरे की सुन रहे, like no chaos, no fish market. तो लाइक एट देयर वाज अ टाइम जब थोड़ा फिश मार्केट बन रहा था, बट फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन लाइक मोमेंट लाइक इट वाज Natural नॉर्मल। level, so हाँ। तो क्योंकि सर आफ्टर सम टाइम रिपीटर्स आल्सो रियलाइज कि फिश मार्केट बन के कुछ नहीं होगा, सो लाइक हम्म। कुछ टाइम रिपीटर्स का जीटीओ बहुत अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू लुकिस पॉलिसी के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन था, पहला वाला। दूसरा वाज रिलेटेड टू लाइक स्कीम्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, सो वो अकॉर्डिंग टू यू इज लाइक जो उनका मोस्ट मिसयूज करता है। So first one was higher class people, second one was lower class, and third was women. So like most of us were speaking on higher class people. तो उसमें भी जब सारे उसी एक ही लीड में बोल रहे हैं तो नो डिस्प्यूट, नो कंटेंशन, सब एक ही चीज में एग्री कर रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैड अ जीपीई। तो सर जीपी में थोड़ा क्योस हुआ, देयर वाज अ फिश मार्केट बिकॉज इन दैट एवरीवन इज हैविंग अ नॉलेज एंड हाँ, डिफरेंस ऑफ एवरीवन वांट्स ओपिनियंस भी आ जाता है। एंड एवरीवन वांट्स कि मेरा सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन बन जाए। हाँ। बट एंड माय ओनली स्ट्रेटेजी वाज मुझे अपने पॉइंट देने, बट आई हैव टू टेक माय ग्रुप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। So what was happening कि after when we discussed our we prioritize our problems, that was the first thing जो सारे ग्रुप करते हैं, अभी तो सबको ही पता है कि पहले क्या करना होता है। And after that we made a solution of a first problem. But what happened after discussing that problem, our group started again discussing that thing only. So I was like कि we have already discussed this problem, we should now move to second problem. तो ये चीज मैंने की क्योंकि because you have time constraint is there, you don't have plenty of time constraint is there, you have to like discuss and come out with a solution within some stipulated time, that is around 15 minutes I guess. So I was like we have already discussed this problem, now we should go to second problem. So there was one problem also in a gp, like there was a tree fell on the railway track, tree fell on the railway track, and there was a mention of one woodcutter, like there was one woodcutter in the village. So it is a hidden resource, it is not clearly mentioned that you can take the help of that guy, but it is a hidden resource. But like when we were discussing the one chest, I was chest number 32, so chest number 31 was sitting beside me, and he like when we were discussing he brought the point that we can call the woodcutter to cut this tree so that we can remove the tree from the railway track. And then but group didn't listen to him, like group was in वो अपने धुन में था, वो अपने डिस्कशन चल रहा था, but I got his point, फिर मैंने चेस्ट नंबर रेफर करके उसका पॉइंट बोल दिया।
एंड क्योंकि सर अच्छी बात है लाइक ही गॉट दैट पॉइंट कि वुड कटर, क्योंकि वुड कटर दिया क्यों है जीपी सर उसमें प्रॉब्लम में, बिकॉज like GTO wants you to like identify this resource, hidden resource. So I got this point. I told him, like I told the group, like chess number 31 has brought a very good point. तो उसके बाद अच्छे से solution बन गया. I was taking the group in the forward direction. And after that we moved to PGT. And sir what happened कि PGT में हम तीसरे जो you already you know that कि there are 4 structures, like 4 phase of PGT. 4 phase. And we got our group got stuck in the third one only. तो हमने पूरे 4 भी हो नहीं पाए and we were like in the third structure only. और then GTO said, okay gentlemen, now you can go to the starting line. And we were like group गया, अब तो पूरा group गया. And like there were 4 groups in our batch. And जो शुरू के 3 batches 3 group बने थे, they were saying कि हमारा तो पूरा GTO हमारा पूरा हो गया था, हमने तो 20-25 मिनट में सारे कर दिए. And sir what happened in the last day, जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो शुरू के 2 जो GTO ग्रुप थे पूरे वॉश आउट ही हो गए. तो फिर देन आई PGT पूरा करना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ वो ये SSB में कुछ भी हो सकता है. लाइक पूरा अनएक्सपेक्टेड है सर. जो आपको लग रहा होगा ना कि जब आपको लग रहा होगा मेरा GTO बहुत अच्छा जा रहा है और GTO माइट बी लाइक लाफिंग एट यू, अबे गधे क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर हंस रहा होगा कि nobody, you're not going to get it. हाँ मनी मन हंस रहा होगा, क्यों फेक दिखा रहा है, क्यों फालतू में बोल रहा है जेंटलमैन जेंटलमैन आई एग्री. जेंटलमैन वैसे यार ये जेंटलमैन वर्ड पता नहीं क्यों यूज करते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता. ऐसा बाहर रियल लाइफ में छोटा बोलता होगा जेंटलमैन नेगी प्लीज पानी देना या प्लीज खाना देना. मतलब भाई टेस्टिंग हॉल से या टेस्टिंग ग्राउंड से बाहर आ रहे तो तब सारे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. एंड व्हाट सडनली हैपेंड, जैसे टेस्टिंग हॉल में घुसे या टेस्टिंग ग्राउंड में गए तो सब जेंटलमैन बोलना. जेंटलमैन सबको लाइक वो काफी शॉकिंग सा. हाँ एक्चुअली इंग्लिश में सडनली सब कुछ हो जाता है, इंग्लिश मीडियम हो जाता है सब कुछ. बट चलो गुड यार, मजेदार है. एंड सर आफ्टर दैट we went for our GOR. This is the most interesting part of जोश so, type. Yeah, definitely Josh type. And we selected our war cry like Jai Bhavani. Yeah, it was I think Jai Bhavani. Yeah, it was like this only. I can't remember completely. And so we started our GOR. So it was very good. So sir, when we started GOR, so what happened? अभी मुझे remember नहीं कि कौन सा chest number था, but when we were there is one wall climb. So sir, when we were climbing that wall, so I am very fit guy, so I don't need any support. I can climb by my own only. So when I like there was one guy already on the top of the wall, and he pulled me up, and I went there, and I told him like you can go down, I can pull other guy. What he did, he just pushed me to the other side. He said मैं खींच लूंगा, और वो धक्का दे दिया मेरे को उधर की तरफ. और I was like भाई, मैंने कहा मदद करने के चक्कर में तू मुझे धक्का दे दिया. वो GTO को भी दिखाना पड़ता है ना कि हम मदद कर रहे हैं सर, देखो देखो. तो काफी लोग ऐसा करते हैं ना, खुद ऊपर नहीं चढ़ सकते तो ऊपर जाके फिर हेल्प करने की कोशिश करते हैं. एक मैं वीडियो देख रहा था ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, वो बंदा वॉल पे चढ़ता है और वो ऊपर से खींचता है किसी को, और वो उसने खुद ऊपर दीवार नहीं पकड़ी हुई तो वो खुद नीचे आ जाता है, उसके ऊपर गिरता है मुंह पे सीधा. तो लाइक यू आर काफी जोश टाइप और काफी फनी भी होता है. लाइक आई वाज मोटिवेटेड माय ग्रुप मेंबर्स की करो करो. एंड लाइक वो सारे GTOs क्या करते हैं, रेस करवा रहे होते हैं. और लाइक देयर इज वन थिंग कि रेस वो होनी नहीं होती है कि सारे GTO एक ही टाइम पे तुम्हें पहुंचवाएंगे. अगर भले तुम्हारा ग्रुप पहले पहुंच गया, तुम्हें पेनल्टी देके कुछ ना कुछ रुकवा देंगे. सही में कभी कभी तो ऐसी कुछ भी जो मन करता है बस दे देते पेनल्टी ले. सर हमारा ग्रुप सबसे पहले पहुंच गया था. 4 ग्रुप लाइक वी वर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. हमारा ग्रुप सबसे पहले पहुंच गया. एंड देन यू टोल्ड ओके जेंटलमैन, हैव यू ब्रोकन एनी रूल्स? तो अभी शुरू में सब बोलते हैं नो. अब GTO पूछ रहा है तो फिर सबको दिखाना है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर हाँ सर हमने सर यस सर बोलने लगे सब. फिर वो पेनल्टी दे दी, 5 का 10 सेकंड ऐसे देते हैं वो. फिर जब सारे ग्रुप वहां पे हमारे लेवल में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने कहा ओके नाउ यू कैन स्टार्ट. फिर सारे ग्रुप एक साथ ही पहुंच जाते हैं लास्ट में.
Cool यार, cool. And sir, हाँ बोल yes बोल sir. बोल बोल And बोल. after that, we moved for our HGT, half group task. हाँ So half group task के बाद group divide हुआ. तो then what happened? Like we were 10 members in our group. There were 10 members. So for HGT, 5 in each group. And what happened? First we हम 5 लोगों ने अपना HGT किया. And then what happened? He separated 3 of us from those 5 members. And GTO sir told us कि वो हम तीनों को फिर से करना है. उस ग्रुप में मैं था और मेरे साथ 2 चेस्ट नंबर हॉट थे. तो हम तीनों को फिर से वो HGT करवाया और दूसरे अप्रोच से करवाया. You also know that कि different approaches होते हैं. So first we did with one approach, and then after he just reduced the number, then he told us to do with this second approach. फिर that उसके बाद completion के बाद we moved for a lecturate. So lecturate हो गया, and lecturate के बाद GTO 1 तो खत्म हो जाता है. And तो GTO फिर GTO 2, then like GTO 2 के पहले दिन होता है individual obstacle. So there was very funny incident about our individual obstacle. So what happened in an individual obstacle, like when just number 34, he also got recommended with me. And so when he was doing his individual obstacle, he did around 4 to 5 obstacle in the one GTO ground of 24 SSB. And after that, after completing 4 or 5, he moved to the other ground for doing individual obstacles. Sir, what happened when he went to for tiger leap? So tiger leap में क्या होता है? Groundsman give you the rope, and वो tiger leap में खड़े होके he's waiting कि कब वो उसे rope पकड़ाएगा. But like the groundsman is sitting, like groundsman is standing in the other ground. वो वहाँ दूसरे ground में rope लेके खड़े हैं, and he is waiting there कि वो rope पकड़ाएगा. And then he realized कि वो दूसरे ground में GTO वो individual obstacle कर रहा है. So फिर तो ये काफी इसमें फिर हमने जब हमको तो for those who are getting confused, तो बैंगलोर में क्या है, 2 SSB बोर्ड के ग्राउंड साथ साथ में, तो उस बच्चे को ये गलतफहमी हो गई कि दोनों मतलब सेम उसने लेके चला हो. उस दिन क्या हो गया था, वहां पे बारिश भी काफी हो रही थी, तो पूरा कीचड़ कीचड़ पूरा मडी हो गया था ग्राउंड. हाँ हमारे कपड़े तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे हम ही पूरे कीचड़ में लेट के आ रहे हैं. तो फिर देखो, लाइक ही डिड अ वेरी बिग मिस्टेक, बट लाइक सर इतनी भी बड़ी मिस्टेक नहीं, हो जाता है गलती, एंड स्टिल ही गॉट. इट इज क्वाइट एविडेंट कि वो काफी इतना सीरियस इशू नहीं है. लाइक सम टाइम व्हाट हैपेंस कि कोई छोटी इतनी ऐसी मिस्टेक्स करने के बाद लाइक कैंडिडेट यूज्ड टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस, देन दे यूज्ड टू गेट अपसेट कि नाउ वी विल नॉट गेट रिकमेंडेड. सो लाइक it's my like request to you, like ऐसा मत करो. like let them, वो एसेसर्स है वहाँ पे तुम्हारी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए. yes तुम right. yeah, like there was one guy in our GTO group at chest number 38, so he was previously recommended for FCAT. So he used to tell me like don't analyze your performance, उसके लिए एसेसर्स है, उनको उस चीज के लिए सैलरी मिल रही है, let them do whatever they want to do. ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है परफॉर्म करना. एंड सर आफ्टर दैट आई फेल्ट सो रिलीव्ड कि अब मैंने कर दिया. आप उसके बाद मैं भूल जा रहा था, बस GTO हो गया, इंटरव्यू हो गया, Next. साइक हो गया, Focus on next. हाँ बस ये हो गया. उसके बाद एंजॉय करो, जैसी टास्क हो गए उसके बाद TT खेलो, टीवी देखो, कैरम खेलो, फिर पूल खेलो, बस यही एंजॉय था पूरा, जितने भी लाइक 12-13 दिन बैंगलोर में. Great. So thank you very much, Negi, for coming on our platform. And I'm sure कि काफी लोगों को काफी ज्ञान मिला होगा, समझने का मौका मिला होगा through your journey. So thank you very much. And Negi, हम जाने से पहले एक मैसेज सबसे पूछते हैं, सारे एस्पिरेंट्स से पूछते हैं. So हम तेरे से भी पूछेंगे कि you have seen failure, you have seen कैसा लगता है जब सपना टूटता है. So you have seen all that. So what is your message to the kid out there who is preparing या working hard लेकिन उसका नहीं हुआ है? So what is your message to him? So like first my message is that don't feel disheartened. Like even if you're getting screen out, conference out, like सबका time आएगा sir. Like even I didn't knew कि मैं 6th attempt में recommend होता. Like अभी I got recommended on 14th of September. Like before that I was like these candidates only. मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, रिटन की प्रिपरेशन कर रहा था. फिर मैंने 4 सितंबर को दूसरा CDS भी दिया था, क्योंकि आई वाज नॉट क्लियर कि मैं रेकमेंड हो ही जाऊंगा. Because if someone is saying कि he will get recommended in this attempt,
So either he's lying or he's having so much confidence in himself or herself. Because sir, I think SSB के बारे में कोई नहीं बता सकता कि कोई तुम नहीं, recommend होंगे या नहीं unpredictable, होंगे. yes. Yes, sir, it is completely unpredictable, uncertain. Yes. When you will think is attempt मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, you will get recommended in that attempt only. So sir, like my message is that keep working, like keep analyzing your performance, sir. I will say one thing, like first SSB I gave 3 years back in 2019, but like what was my personality that time? Like my personality is same, overall my personality is same, I have not changed that much. But like 3 साल पहले मैं recommend नहीं हुआ, अभी हो गया. So the only difference, like sir, what I believe कि most of the candidates are having these OLQs in themselves. So जब आप उनको बाहर पे मिलोगे या कैंडिडेट्स लाइन में देखोगे, they are having these OLQs. But what is happening, वो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही है. जब टेस्ट चल रहा है ना, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही है. So unless you will not project your OLQs, you will not make it. तो वो, और sometime what happen, like मेरे से भी ये गलती हो रही थी. In order to perform better, we were not showing our natural self. Natural. Like yeah, sometime क्या हो रहा था, fake personality दिखा रहे थे in order to perform better. So I think when you are performing in the GTO, forget like someone is looking at you, someone is judging you, like forget about the GTO. Like भूल जाओ कि एक ऐसा तुम्हें देख रहा है. Just focus on your performance and task, live in that moment. So that is one the message I would like to, and like never lose hope, keep working hard, like one day you will definitely make it. So सबका time आएगा sir. Like this is my message to all. Great, Gautam. So thank you very much. Thank you so much, and all the best for your tenure at IMA. And I hope that you do well and you perform well. You do good for your company, and you get commissioned with your course on time. So thank you very much for coming on our platform as a guest. And guys, please like, share, and subscribe if you like his journey. तो एक like ठोक दो, comment ठोक दो, और subscribe तो कर ही देना. And also, if you want to get yourself interviewed, mock interview SSB का देना है, so Commandant Rajiv Ranjan है, he's a trained IO with experience of more than 2500 interviews. So आप वो program में enroll कर सकते हो. Link is in description and in pinned comment. So take care and enjoy, and Jai Hind one and all.